आपका नाम? प्रियंका राजपूत। मेरा नाम विनीता खत्री त्रिपाठी है। Hi, my name is Ekrant. Hi, my name is Sachin Pathak. Hi, my name is Vineet Verma. Hi, my name is AKSHARA. मधुकर। I'm Ren. Ayush Jain. मेरा नाम सूर्य मुंजान है। मेरा नाम कंचना है। निशान सिंह। मेरा नाम नमस्कृति है। ये है मेरी मम्मी मुक्ति और ये है मेरे पापा देवा। Well, I'm a working professional. Been in corporate for more than 11 years now. And quite excited about pursuing this acting and theatre along with it. मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम रहा था कि मैं किसी प्ले में काम करूँ, किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करूँ और टॉट स्टूडियो ज्वाइन करके मेरा ये सपना कहेंगे पूरा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर। आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस स्टूडियो। I've been doing theatre for at least four years now, and I've worked on some short films and some theatre plays as well. So I'm basically a corporate guy, and along with that, I'm actually passionate about acting as well. And I've been doing acting since last 3 years. I am working in the marketing field. So basically, I am a project manager in a company. So along the lines, I always wanted to explore this field and world of acting. मेरा खुद का स्टार्टअप है एजुकेशन कंपनी से रिलेटेड। इसके अलावा मैं कोरियोग्राफर भी हूँ और थिएटर में 5 साल से मैं थिएटर कर रही हूँ। Basically, I'm a teacher as well as a student. So by profession, I'm a graphic designer, and acting का कीड़ा तो स्कूल टाइम से था, but then ये एक्सेप्टेंस कि यार चलो एक बार ट्राई करते हैं, वो बहुत टाइम बाद आया जब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा ऊब गया था। मैं 3 साल से एक्टिंग फील्ड में आया हूँ। मैं एक एक्टर हूँ और मैं टॉट स्टूडियो के साथ 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। टॉट स्टूडियो से भी हुई है, मैंने माइजनर और स्टीफेंस की ट्रेनिंग को 5 सर से ली है। सो यस, मैं स्टूडेंट हूँ एज वेल एज एक्टिंग और एज वेल एज इंजीनियरिंग और किसी भी फील्ड में। बहुत सारी चीज़ें करी है आज तक लाइफ में। एक्टिंग, डायरेक्शन बचपन से ही शायद शौक था मेरा। फिर थोड़ा डांस की तरफ गए, थोड़ा कैमरा वर्क किया, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करी वेकेशन। फिर जब लगा कि ज़िंदगी में सब अब व्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो वापस से अपना पैशन फॉलो करने के लिए मैं टॉट में आया। How was the process of this play, actress? this was very interesting. So we were asked to do a reading which was online, and it gave us the essence of the play and also an insight into the characters of what we were supposed to be. We could supposedly play. So doing that reading online really helped us to get into the play, into the essence, and finally when the cast was announced, I think that we expected what we should be assigned. So it was very much, I would say, more to what we are, that's the way the casting was done. So I think the director has done a very good job of that. And the play is about an aging actress. It's a short story written by Munshi Premchand about an aging actress set in the 1930s. And it's a love story, but a very interesting ending. So for that you need to come and see the play whenever it is next. The overall process was kind of quite very interesting because it was an ever-evolving process. You know, it wasn't that we kind of had a stone engraved script with us, and then everybody is following that.
as and when the process was evolving, the roles and the nuances of the characters were also kind of getting evolved, and even more than 50% of even like when we've crossed the 50% journey, still there were things which were getting changed, because that's how the director felt it's going to kind of add a new dimension to the play. So it wasn't a very fixed process, as I say. The fixed part of the process was it was always changing, So I think that is something which is very interesting, because it just kind of keeps helping you to add new and new things, as an actor and also in the play. So that is something which I really, really enjoyed. So my process was really great. There were some things that I had to actually start relearning that I may have actually forgotten in the past. And I also learned a lot of new things also in this theatre while working in the production, which I really appreciate and give comment to the director. This has been a very helpful and learning experience, because as a newbie, I would say. So when I came here, I got to see a lot of people with a lot of talent and passion about acting, and through them and through guidance of Gopal sir, I got to learn a lot of various dimensions in the whole process, and how a theatre show pulls off, and how we create something as big as actress with small steps each day. So it's been a very fruitful process. स्टार्टिंग में वो बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि हम एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करने वाले थे, पर डायरेक्टर की हेल्प की वजह से काफ़ी सीन्स ऐसे ऐड ऑन हुए कि पता ही नहीं चला, वो बहुत पार्ट लग रहा था स्टोरी का स्टार्टिंग से ही, कि हाँ ऐसे ही होनी चाहिए थी स्टोरी, उसमें ये सीन्स ऐड ऑन होना ज़रूरी था। उसकी वजह से उसका स्टार्ट और एंड बहुत स्मूथ निकला। When I got the call from Gopal, I never really expected that I would be playing this character. I was just wanted to participate and do at least some exercises and all, just to improve myself. Other than that, I never thought anything. And when I got the character, that time also it was a mixed feeling at that time. But later on, I realized that my character was well thought out, and I really enjoyed the process. प्रोसेस काफ़ी अच्छा था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो सर ने मुझे गौतम ऋषि का रोल दिया था, तो तब मैंने सोचा था मेरी फिगर तो वैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं अपना आधा फुट पेट अंदर करूँगा, लेकिन तो पकौड़े खा के 1 फुट ज़्यादा बाहर हो गया। लेकिन उसकी वो तो नहीं आ पाई फिगर, लेकिन मैं उसके एक्टर में करेक्टर में चला गया बेसिकली। और उसके बाद एक मैकू नया करेक्टर डिस्कवर हुआ, वो भी काफ़ी अच्छा करने में मज़ा आया, एंड द प्ले वाज वेरी नाइस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कन्विंस्ड नहीं थी कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, बिकॉज इसमें कैरेक्टर की एज जो है वो सॉर्ट ऑफ 30s में थी, एंड आई एम अ बिग चाइल्ड फॉर दैट, मेरा पर्सपेक्टिव है ये। बट चैलेंज भी था कि शायद हो सकता है, मतलब मैं बहुत करना चाहती थी तारा देवी, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए वो साइड एक्सप्लोर कर सकती थी मैं एज एन एक्टर, जो मैंने किसी और कैरेक्टर में अभी तक नहीं की थी, बिकॉज मोस्टली आई डिड कॉमेडी। तो इसमें कॉमेडी नहीं था, ये टोटली सीरियस कैरेक्टर था, और इसमें मतलब आई वाज क्राइंग ऑल द टाइम ऑलमोस्ट, सो दैट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर मी। सो दैट्स व्हेन द डायरेक्टर केम इन द फ्रेम एंड ही ट्रस्टेड मी एंड आई ट्रस्टेड हिम एंड आई डिड इट, एंड हो गया फ्लॉलेसली, ऐसा लगा मुझे, हो गया एटलीस्ट, मुझे तो यही लगा। और प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मैंने बहुत सीखा। एक्चुअली अभी मेरा लास्ट मंथ ही एक प्ले था बॉम्बे में, तो कॉमेडी प्ले था, बहुत डिफरेंट रहा वहाँ एक्सपीरियंस, सेम डायरेक्टर के साथ काम करना कॉमेडी प्ले में, एंड देन इसमें सीरियस प्ले में, वो बहुत डिफरेंट, एक अलग ही टेंशन्स होते हैं, तो डायरेक्टर की अप्रोच भी चेंज हो जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करना एंड देन उसको इनकॉर्पोरेट करना, वो सब सीखा। तो अमेजिंग प्रोसेस एज एन एक्टर, आई लर्नड अ लॉट। जितना मैंने लास्ट 3 महीनों में सीखा है, उतना मैंने शायद लास्ट 3 सालों में नहीं सीखा। सो यस, एज एन एक्टर मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया एज एन एक्टिंग, मतलब समझना ही स्टार्ट किया है। तो उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मैं फर्स्ट डे था और जो मैं लास्ट परफॉर्मेंस की है,
तो उसमें जो मैंने सीखा है या जो मैंने ग्रोथ देखी अपने अंदर, वो काफ़ी बेहतर थी। जिस तरीके से शो को दिन पर दिन बुना जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, और फिर फाइनल प्रोडक्ट तक जब ओवरऑल प्रोसेस मैंने देखा, मोस्टली बिहाइंड द कैमरा देखा, और लगा कि चीज़ों को एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में ऐसे ही बनाया नहीं जा सकता है। इट टेक्स टाइम, और टीम के हर एक मेंबर ने अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के हिसाब से, उससे कहीं ज़्यादा इनफैक्ट यहाँ पे टाइम दिया, टाइम इन्वेस्ट करा, मेहनत करी, और उसी का रिजल्ट था जो फाइनल जो प्ले हुए वो इतने अच्छे गए। सो टॉट के साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? टॉट के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। मेरे घड़ी बन रखा वैसे सभी ठीक है, तो यहीं पे हूँ मैं सबसे ज़्यादा। जब घर है तो अच्छा ही है। Absolutely wonderful. I so enjoyed being part of this group. It was energizing. It was a lot of happiness, I would say. So good to be a part of this group, which gave you energy, which shared its dreams, its happiness, its quirkiness in so many ways. Had so much fun with everybody around, and the unstoppable cup of teas that we would share. All a great experience that I would like to repeat again. Fantastic. You know, I think it has been an amazing journey. The kind of people that I've met here, the kind of actors, you know, who are a part of this studio. I think every day has been like a learning experience. You know, right from somebody who is you know, the youngest in the group to the oldest. Everybody brought in their own flavor, and I think it was a very safe and a very open space, you know, that this studio provided to every actor to kind of very freely express themselves. So then, you know, I mean, one thing that an actor really wants is to be in a space which is comfortable, so that, you know, he's able to kind of bring things out, and I think that is exactly what the studio provided. So I think I had a really good time, and I'm looking forward to many more collaborations. I had a great experience. I got to meet a lot of people here, which all positive, thankfully. And I feel that I have actually learned a lot of new things also over here, and met a lot of great friends that hopefully will be keeping in touch with. And yeah, and also got to rekindle some friendships also that with people that I know from a long time as well. This place has really, you know, given me a lot. And if I really see myself 2 months back, what I was as an actor and what I see now myself as an actor, I would say this is a better version of myself as an actor. And of course, along with myself and along with the director of the play and the studio, the co-actors has also, you know, contributed in nurturing me, in turning me into a better version of myself, of me as an actor. And the place is really good. It's just not you that who will be, I mean, allowed or will be, you know, given the chances to put in your, I mean, inputs into your act. But it will be your healthy co-actors, I mean, as well, who will be basically there for you always, in terms of, you know, sharing the ideas and you know, basically sharing their talents and, you know, knowledge, I mean, in terms of art, which basically helps you in nurturing down the line to basically become, or basically lead to a path that can really make you become a better actor for the future. It's been amazing. I got to learn so many things from the very scratch. Actually, a few years back, I tried to start with acting, but I couldn't continue. But then suddenly, you know, I got in touch with Gopal sir again. I started working here, like understanding from scratch and how acting has to be evolved, and as an actor, how I can evolve, and if I can work or not, if I'm good enough to be an actor or not. I can explore all those aspects about myself. So that's how it's been an amazing experience. बहुत ही ज़्यादा अच्छा। काफ़ी एक्टर्स बोलते हैं कि वो एक्सप्लोर करने के लिए
यहाँ पर आना चाहते हैं। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पर आपको सुना जाता है। जैसे एक्टर्स के भी काफ़ी पर्सपेक्टिव रहते हैं, उनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एक्टिंग से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो पॉइंट्स सुने जाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है थिएटर में। It was wonderful. I never thought that I will be able to perform that too on stage. लाइफ में कुछ ऐड हुआ है मेरी, इसलिए कि शायद फिलर्स था, एक तरीके से फिलर्स का काम किया है TOT ने। Obviously, Gopal sir is like a mentor to me, and TOT actually brings this, your caliber as an actor, improves your caliber as an actor. आपको काफ़ी हेल्प मिलती है in terms, not just in terms of acting, but also being a better person. I think it's a very good environment. And यहाँ पे आने के बाद I think बहुत अच्छी और बहुत सच्ची टीम मिली है। Like shades हैं, different हैं, but then अलग अलग लोग, उनका एक्सपीरियंस वर्सेस वगैरह और द वे दे आर इन रियलिटी इट्स लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं रही थी रोज स्पॉटने की। जब से TOT ज्वाइन किया तो एक एक्साइटमेंट थी कि रोज स्पॉट के जाना है, चाहे लेट पहुंचना है, जो भी करना है, कुछ ना भी करना हो तो भी एक्साइटमेंट रहती थी तरह की। पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हमेशा प्रोडक्टिव हुआ है, काफ़ी कुछ सीखा है एक्टिंग से रिलेटेड एंड लाइफ से रिलेटेड भी। टॉट के साथ डे 1 से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहता है हमेशा ही। इनफैक्ट मैं एक्टर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आपको काम करना चाहिए टॉट में, बिकॉज आपको क्रिएटिव फ्रीडम होती है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। आपको एक जब एक्सप्लोर करने का दायरा मिलता है तो आप खुल के चीज़ें कर पाते हो। आपको चाहे डांट ही पड़े, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि मेरे एक्सप्लोरेशन में तो डांट ही पड़ती है, तो बट दैट्स फाइन, एटलीस्ट आप कर पा रहे हो। सारे लोग बहुत ही it feels like a family now. It's been just not even a month, I must say, but already it feels like a family, and I feel happy when I'm here in the studio. अगर कोई टॉट ज्वाइन करना चाहे तो क्यों करे वो ज्वाइन? ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमारे सर और जितने भी क्रू कास्ट जो भी बोलते हैं, जितने भी लोग हैं ज्वाइन करते हैं, वो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं, सब फ्रेंडली हैं और काफ़ी मज़ा आता है। It's an amazing group to be with. So it's not just about acting or doing theatre. It's just being with these people that you learn so much. So I, as you can see, I'm a senior person, and everybody around me here are very young people, young professionals. But I got so much to learn from them. So I would say, somebody as young as Riyanka or Madhu, they taught me so much about the nuances of acting, of how to, present yourself, or just to be on the stage. I learned something from everyone, and so that would be the reason why you should join TOT Studio. It's a great learning experience. It's a great learning place, I would say. To explore, definitely, and I'm sure there are other places too. But why TOT is because I can talk from my experience. It just gives you the right kind of ecosystem to develop yourself. People here, the guidance is coming from very safe hands. People who are very experienced, who have been there, done that. And I think the kind of selection, the casting that they did, I'm sure that's a process that they follow for every production. There's a thought behind it. So I think once you kind of are in the journey, you realize that, alright, how the different dots are joining it. And I think you need to kind of surrender to the process of what is followed at TOT. And I think the culmination is really nice. I think TOT is probably one of the most professional theatres that I have actually been part of. Everyone over here has a vision, a creative vision that is very less found
in other theatre groups. I personally feel, and I've been in a lot, and I think I really commend that, because it is very difficult for a person to actually have a vision, that also a creative one, because it is also important as an actor to feel that your time is not being wasted. And I feel that my time here has been absolutely fantastic. It's been worthwhile, and I just had an amazing experience over here. You just not grow as an actor, but you also grow as a personality, and you would always keep on seeing each and every day that you are basically coming across a more polished form of yourself. Like if I really talk about myself, I was an actor before. I was an actor now. I mean as well. But the transition and the development or the evolvement that I really see in myself is actually because of the director and also the environment that I've been growing up into. And we really work here on every minute details. Like if you are really performing on an act, or if you are given a scene, there basically might be a scene where you are basically asked to perform or do an act in a very broader manner. But at the same time, there are acts when you really have to be like you have to do an acting which should be very controlled, and that is really what difficult part is for an actor, to do a very control acting. And that is a place, basically this is the place where I actually learned that what control acting is all about. So if anyone really want to see a bigger transition or transformation in themselves as an artist, then I would really say that this is the place you should look up to. If you love acting and you want to at least want to explore yourself into the world, like can you be creative or can you be expressive, you should join theatre. You should start exploring yourself, know the world around with a better version and better vision. So for that, I think it's good to always start with theatre. Theatre gives you a lot of new perspectives. एक्टर का पर्सपेक्टिव जो है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाए, उसके वजह से TOT डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए. एंड पर्सनली ऑल्सो यहाँ पर आपको आउटसाइडर फील नहीं होगा कि आप आ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो एंड जा रहे हो. आपका जो पार्ट अगर 3 मिनट्स का भी है, उस पर प्रॉपरली वर्क किया जाता है, पर्सनली अलग से टाइम देकर. The same reason a caterpillar should be a butterfly. आप बाहर क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे आप लोगों से मिलते हो या कैसे आप हो इन रियल? TOT में आने के बाद आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो? Yes, I think TOT स्टूडियो को डेफिनेटली एज एन एक्टर अगर आपके पास स्कोप है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो. क्योंकि वही है ना, नई कंपनी है, आप जब नई कंपनी में आते हो तो आप भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पे हम काम करते हैं एज अ टीम, नॉट अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि आपको फ्रीडम मिलती है. आप अपने आइडिया पिच कर सकते हो, आप अपना कर सकते हो, मतलब एज एन एक्टर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो. वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अपना करो. अगर आपको वो जाता है प्ले के साथ या वो फ्लेवर ऐड करता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर वो आपको समझा देते हैं कि क्यों नहीं, उसका रीज़न देते हैं. ये नहीं कि आपको सिर्फ बता दें कि नहीं मेरे नहीं है तो यही होना चाहिए. डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लवली, आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ या जिनसे नहीं मिला हूँ, उनको एज अ मेंटोर लेके चलता हूँ मैं. और मेरी लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स हैं, गोपाल सत्यमित्र इज वन ऑफ देम, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ पर्सन. Oh, he's wonderful. Everything is here is because of the hard work that he puts in. His personal input in everyone's acting, in everyone's presentation is so good. So, hats off to the kind of patience, energy, everything that he has. So, I really am indebted to Gopal Satyamitra for believing in me and
making me a part of this studio. So a big thank you to him, a big shout out to him. Very honestly, Gopal's inputs really matter, you know, in this creative space. Even before, when I was like kind of collaborating on a short movie, where Gopal was not officially a part of it, but for me, what he thought about the script and what he thought about everything kind of really mattered, because I think he brings a lot of value from his experience and also from his passion towards this. You know, there's a lot of value that he brings in, and I think I've experienced the same thing in the last 1.5 months during the preparation of this play. And one thing which kind of stands out for Gopal is he's extremely accommodative. You know, he knows that different people are having their own different journeys in life. You know, how kind of he needs to accommodate himself so that all these journeys can be accommodated and a play can be made. You know, and it's a really difficult job. It's easier said than done. There are 14 different people. Some are working, some are not working. Some are night shifts, some are day shifts. You know, some are egoistic, some are not egoistic. How do you manage all of that and still come out with a play, you know, like that? I think that requires some very strong center, you know, within you, and only a centered person can do that. And I think that is what Gopal brings in. So yes, I really wish him all the best. The director is great, personally speaking, and like his creative vision, his professionalism, I really commend. And I think that it is very less that you get to work with a director like this, who actually gives the actor enough space, enough freedom, you know, so that it can help build also upon that vision that he also has. If an actor can also contribute to the vision, which I think is just it's really rare to find somebody like that. Gopal has really, you know, helped me and the other co-actors, you know, a lot in basically making or creating a best, you know, version of ourselves. And I believe it's getting, you know, polished day by day, every day. I have a lot of things to say about Gopal sir. Actually, first of all, I trust him as my mentor from the very start. So as and when he ever opted me for some opportunity or even wanted me to like start learning or exploring, so I trusted with him through the whole process. So he's a very good mentor in terms of he's with you in each step. He's there to guide you, make you understand your responsibilities, your roles, how to be better in those versions and how to explore and express yourself. So it's been a very learning experience because of him, because he was there to guide you at each step. गोपाल सर के बारे में हाँ बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ. पहले तो थैंक्स करना चाहती हूँ इतना ट्रस्ट करने के लिए और मेरी पर्सनालिटी वो ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि एक्टर में कुछ एक्टर्स में होता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है, खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो डायरेक्टर का काम होता है कि खुद पे ट्रस्ट दिलाना. So, उनके वजह से मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया. वो थैंक यू सो मच फॉर दैट. If a caterpillar has to be a butterfly, then there has to be someone who will make that happen. And we may call that nature, we may call that God. The director is like that. And here, if you want to be a better person, if you want to be a better actor, if you want to be a better director, if you want to be a better co-star, you can learn that from the director. डायरेक्टर सर के चक्कर में हम यहाँ पे हैं क्योंकि सर हमेशा माहौल को लाइट रखते हैं, सबको समझते हैं, सबकी सुनते हैं और ऐसा नहीं कि किसी अपना थोप दे. किसी पे कई लोगों को आदत होती है कि थोप दो कि नहीं यही करना जो मैं बोल रहा हूँ. सर का ऐसा नहीं, एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं और फनी आदमी है, सार्कास्टिक आदमी है, बहुत बढ़िया सर हैं और वन ऑफ द फ्यू पर्सन हैं टीचर्स जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. हाँ, डायरेक्टर के बारे में मेरा गोपाल सर के साथ एक्सपीरियंस पिछले 5 सालों से मैंने उनके साथ काम किया. 2018 में मैंने पहला प्ले किया था उनके साथ जिसमें उन्होंने डायरेक्शन भी की थी. तो 15 to 20 डेज का वो मेरा एक्सपीरियंस था उनके साथ एज एन एक्टर, विच वॉज अमेजिंग. तो आई थिंक आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम देयर ओनली बिकॉज आई वॉजंट ट्रेन्ड एक्टर. मैं अनट्रेन्ड एक्टर थी दैट टाइम. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए. तो ट्रेनिंग भी फिर मेरी गोपाल सर से ही, 𝗕𝗓𝗡𝗓 एंड गोपाल सर सीसी में मेरे मेंटर थे. देन उसके बाद 𝗲𝗔 और स्टीफन में सर रहे अगेन गोपाल सर. तो ही इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन.
बाउंड्रीज नहीं होती है उनकी स्क्रिप्ट में, लाइक यू कैन गिव योर आइडियाज एंड देन यू कैन इनकॉर्पोरेट इट, और वो मतलब ही एक्सेप्ट इट एज अ डायरेक्टर, यू शुड वर्क विद हिम, सो यस यू लर्न अ लॉट। डायरेक्टर के बारे में कहना चाहिए बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं इस लाइन में आया हूँ बिकॉज ऑफ हिम आई गेस, क्योंकि मैं मिला था पहले एक वर्कशॉप में, वहाँ से मैंने समझा कि अच्छा सीखना भी होता है एक्टिंग में। मुझे ऐसे लगता था कि चलो ठीक है हो जाती है। यूजुअली हम एज अ ऑडियंस, आप लोग एज अ ऑडियंस, सब लोग सिर्फ जो स्टेज पे जो आपके सामने हो रहा है उसको ध्यान में रखकर तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक इंसान होता है जिसने उसको, उसका हर एक सेकंड, हर एक मूवमेंट, हर एक चीज उस प्ले की बनाई गई है। मतलब कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, ही इज द गाय, एंड हियर इन द प्ले द एक्ट्रेस 𝗕𝗃𝗀𝗧 sir was the guy who made it possible। सबको बहुत प्यार से सिखाते हैं और भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, डांटते नहीं है लेकिन अपनी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने भी रख देते हैं, और ये एक कला है। यकीनन he is a amazing person। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? It was just fantastic। You know that drama itself is an experimental performance, और इसके बारे में बोलना, इनके experiences के बारे में, being a parent, I feel that she enjoyed a lot। She enjoyed the drama, she enjoyed the story, she enjoyed learning acting, staging, backstaging, and above all she enjoyed a lot with the entire crew। It was her debut performance as an anchor, so I felt that she did well। और सबसे अच्छा पार्ट ये था कि being a mother, I was little bit hesitant, you know, I mean I was constantly advising her, do that, do this, don't do that, don't do this, and I was literally, you know, that not that much confident in the beginning that will she be able to do that or not। But I think that because of the entire environment of this TOT studio, that I can say that congenial environment that was created, and she felt that she was one among you all since many years, you know। She is here for the first time in Delhi, but I never felt that she was a stranger here. She was one of the family member here, so it was a great experience for her, and being a mom, I felt that I was wrong in the beginning that she can be able to do or not. She did it perfect। So it's quite positive. Acceptance of her with your team was super। So I can tell my story कि मैं कैसे TOT studio के contact में आया। So I just migrated from Gujarat and I have a home just nearby। So I was wandering here and I saw TOT studio। So I just came here out of curiosity because I was knowing that after 15 days she will come here for spending her vacation। So I thought what to do, vacation में इसको मैं कैसे occupied रखूँ, and she was already doing theatres there। So मेरा मानना था कि ये कुछ ना कुछ activity vacations में चालू रखें। So I just came here and I met Priyanka and then we have a long discussion with her, and then she told me that okay, जब वो आएगी तो आप बताना, we will do something, कुछ ना कुछ तो activity हम करते हैं, so we'll see how we can engage her। So this is how I came in contact with TOT studio। I felt really nice। यहाँ के सारे crew members like बहुत सालों पहले के friends हो वैसे, और स्पेशली मेरा कोई मैं अभी गोपाल सर से मिली, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे नर्सरी से टीचर थे एक्टिंग के टीचर थे। लाइक बहुत हम्बल है और मिस्टेक्स भी लाइक एकदम जेन्युइनली डायरेक्शन देते हैं। लाइक हर एक स्टेप में वो साथ में रहते थे, लाइक इसकी जगह ये, और रेदर देन जस्ट सिटिंग एंड पॉइंटिंग आउट, ही इंस्टेड स्टूड अप एंड शोड कि ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। घर पे किसी की सुनती नहीं लेकिन सबकी सुनती है, खास करके आप दोनों की तो बहुत ही सुनती है।